Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Guys, please write yes in the chat if I'm audible and visible to you. Great, great. Thank you guys for confirming. So, welcome everyone. We'll just start with the session. My name is Avinash, and we will have Shivangi ma'am for today's trading session. And हम थोड़ा बजट के अराउंड भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, राइट? प्री बजट डिस्कशन आई वुड से विद शिवांगी मैम ओनली. एंड जस्ट अ नोट गाइस, वी विल नॉट हैव एनी सेशन टुमारो. कल मार्केट भले ही चालू है, राइट? द मार्केट इज ऑन, बट हमारा कोई भी सेशन नहीं होगा. बट वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम लोग मंडे को जो भी बजट में डिस्कस होगा या जो भी आता है, यू नो, वी विल कवर इट एवरीथिंग ऑन मंडे एट 11:30. एंड ये सेशन जो होने वाला है, हमारे एक्सपर्ट रुचित सर लेने वाले हैं. So he's like a technical expert and he have recently joined Motilal Oswal, and अच्छा खासा उनको expertise knowledge है on the market. So he will, you know, take us through all the budget discussions and what are the factors that will gonna affect in budget and the sectors or stocks, I would say. So let's it for Monday, where we will discuss, have a deep dive into the budget discussion. एंड आज हम थोड़ा सा एक लिटिल ओवरव्यू प्री बजट बात करेंगे. शिवांगी मैम आपको पूरे अपडेट देगी. एंड अगर हम मार्केट की बात करें, हमने सुबह देखा था कि, बट अगर अब हम देख रहे हैं इट्स नियरली 1% के अपसाइड पे है, वो 0.8 का अपसाइड पे है, राइट? हमें अच्छा खासा एक रैली देखने मिला था सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद. 10 बजे से शुरू हुआ था एंड फ्रॉम देयर 23,389 से हमें एक 23,523 तक एक अपसाइड दिखने मिला. उसका थोड़ा सा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला निफ्टी में, एंड अभी एक नीचे आ गया है थोड़ा सा. बट हमें फिर भी हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अच्छा खासा और एक मोमेंटम आ सकता है, राइट? बट इन विच डायरेक्शन वी हैव टू प्ले, जस्ट वेट फॉर द फाइनल कॉल बाय, यू नो, शिवांगी मैम, और दैट शी विल शेयर विद अस. Anil ji, that's a very, you know, good thing, I would say. Waiting for Nifty coin like a stock trader is waiting for a breakout. Absolutely. So we are still waiting for, you know, Shivangi ma'am to join us and to get our insights around the market. Can you guys hear me now? Yes. So, you know, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि बजट में So I guess Hello, Avinash. Yes, Deven sir. Yeah, Avinash, Shivangi is not here, so Devan is taking the session today, right? Okay, great. Thank you so much for updating. So guys, we will have Deven sir today. Shivangi ma'am is busy with some deliverables today and she will not be able to make it up. So we will have Deven sir with us today for the session, and Deven sir will give you a little insights around the budget. I would say a pre-budget discussion, and we will move ahead with the stocks and the trades if you will have any potential trade. Yesterday Chandan sir session was excellent. Definitely Prakash ji, हमने अच्छा खासा एक मोमेंटम देखा दोनों इंडेक्सेस में, एंड दोनों इंडेक्सेस में हमने अच्छा खासा. Yes, Deven sir, you are audible. Your camera is off. Okay, so today I'll be taking the session as Shivangi ma'am is not available right now. So we'll start with the session. Just give me 2 minutes. I'll just set up my screen. I'll on my video as well, and then we'll start. Sure, Deven sir, sure. Mayur ji, we will have our learning session at 4 p.m. in the evening, and today's evening, sir. And yes, stay tuned and don't forget the session where, you know, Shivangi ma'am will discuss
a lot of things around derivatives, decoding derivatives. So please ready with your questions or whatever you have with yourself. जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी शिवांगी मैम सिखाएगी, अगर आपको कुछ भी डाउट है, please ready with your questions and you can shoot your questions out there during the sessions. So please make sure you don't miss this learning session. Any of the over to you, sir. Yes, so sorry for delay in the that's why just got late to join. But yes, we are back. Nifty की सबसे पहले बात करते हैं. So Nifty is up by 200 points right now. We have seen a good up move in Nifty, and Nifty has broken its resistance of 23,400, 450 levels, and it has given a nice move in the intraday towards 23,530 levels. So we have seen a decent up move in Nifty today before the budget. That shows that there is the buying interest from the lower levels, and bulls are trying to take the control. Uh, there are bears who are trying to hold the market until and unless they are not they do not see any good news into the budget. There are FIs who are selling since many days, but right now, if we see today's price action, I think definitely Nifty has done a very nice work. And from last four consecutive days, we are seeing higher high, higher lows. So in Nifty, so this overall shows the strength into the market from lower levels. Today, if we are able to close about 23, 450, 500 levels, then definitely that could be a breakout level. But again, we have a budget tomorrow, and tomorrow markets are open, so there will be the volatility into the market, and that's why we all need to watch out and trade accordingly. Those who are trading options, they should trade with a strict stop loss. There is a huge volatility moves into the market. Today we have seen that volatility has decreased, IVs has crashed, but from last 5 6 days the IVs were rising. Yesterday and today we have seen the crash in IVs before the budget, and tomorrow again we can expect the IV increase in the morning time, and in the afternoon time when the budget will pass, we can again see an IV crash, which will lead to the option premium volatility, right? So there will be some volatility, and those who are trading definitely should trade with a strict stop loss. Reason being that there will be multiple news flows into the market, and VIX will be accordingly hitting the options, right? So this is how we all need to look out for the market tomorrow and trade accordingly. Now we'll talk about Bank Nifty also. Bank Nifty has also tried harder to cross the resistance of around 49,600 650 levels. Today it made a high of around 49,670 levels as well, but was unable to sustain. We have seen some profit booking from higher levels. Again, Bank Nifty has also shown a good up move from last 4 to 5 days and formed a higher top higher bottom formation. But again, there is some resistance around 49 650 700 levels. Once it crosses that particular levels and sustains above that, we can see a good up move towards 50,300 levels. So that is the possibility. But again, as we have already discussed, that there will be a volatility and there will be a big swings tomorrow possible. So one need to trade accordingly, look at the levels, and then plan their trades. So this is about Nifty and Bank Nifty. We'll try to take some queries as right now before we look forward towards the budget. But before that, there are some stocks which have shown a decent rally, and these stocks usually moves before budget, on the budget, if there is any good news into that particular counter. So we have seen that railway stocks are showing good strength today. So firstly, if we can see that in IRCON International, so in IRCON today it is up by more than 8%.
and it has given a strong breakout of a falling trend line we can see on charts, right? So this is the counter which is looking good. On the higher side, there is a resistance around 225 to 30 levels. Once it crosses that particular levels, again we can see a good up move into this counter. So Ircon is looking good. Then other uh, rail PSU stocks are IRFC. Again, IRFC, we can see that it has given a breakout of a falling trend line, right? But as there is budget tomorrow, there will be volatility, and hence, currently we should avoid buying. We should wait for proper breakouts, and if we get any breakout, then only we should go ahead. So this is how we need to plan. Uh, some more stocks like RBNL also is also looking good. Uh, Again, this is one of the counter of rail PSU. Again, we have seen that a falling trend line breakout is given by this particular counter as well. On the higher side, there is a resistance around 480 levels. Once it crosses that level, we can see a good up move in rail PSU stock. So we have discussed 3 to 4 stocks, and all are rail PSU stocks, railway stocks, and they all have given a good breakout before budget itself. So any good news for railway stocks can lead this rally upwards. So those who are planning to buy can wait for the budget, and accordingly, if they find any good news uh, and we can expect some good move, then definitely we'll recommend. We have traded multiple trades today for intraday, as we have seen that intraday charts were also looking good. So if we take the chart of RBNL for intraday, it has given a decent up move and it is up by 7%. So any move of 2 to 3% would have captured today into the rail PSU stocks, and we have recommended those for intraday as well. So this is about rail PSU. The other sector which looks good is defense sector, and some of the stocks of defense sector can be BL. This is looking good on charts. There is a slight small resistance around 298 300 levels. If it crosses that particular level, we can see a good up move in BEL. Some other stocks which looks good are BDL, again the defense related counter. Again, this stock is trading well since last 3 to 4 days. On the higher side, there is small resistance around 1350 levels. Once it crosses that level, we can see a good up move in this particular as well, counter as well. So these are some stocks, some sectors we already discussed, that is railway stocks and defense stocks. So we all should look at this particular counter. Now we'll take some queries, and after that we'll try to take some stocks which we can trade or we can buy for 2 to 3 days for conviction delivery. If there are any, I'll definitely recommend. Till then we can take some queries. देवेंद्र सर, सो जैसे कि हम काफी सारे स्टॉक्स के अराउंड अभी बात की है कि किसमें तेजी आ सकती है और कुछ में थोड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है. सो कंसिडरिंग द फैक्टर कल हमारा बजट भी है, राइट? सो एनी प्री बजट इफ कैन डिस्कस जहाँ पे थोड़ा सा कोई की फैक्टर प्ले कर सकता है बजट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या किसी सेक्टर्स में, जैसे कि आपने रेलवे में पर्टिकुलरली बात किया, जैसे डिफेंस सेक्टर में हम लोग कुछ देख सकते हैं तेजी, या फार्मा में और ऑटो सेक्टर्स में. लाइक ऑटो सेक्टर्स में टाटा मोटर्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक फॉल आया उसमें. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जिसमें हम अच्छा खासा एक 52 वीक्स या 53 वीक्स लो पे है, राइट? तो उसमें कुछ हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, कुछ उस पर इफेक्ट होगा. डू वी हैव एनीथिंग लाइक दैट और एनी ऑफ द सेक्टर? if we talk about budget session and budget के बाद अगर कुछ short term के लिए या medium term के लिए buy करना है ना, तो I will recommend that do not buy any stock which is down near 52 week low. Basically क्या करना है ना, जो stock strong है, जिनमें news flow अच्छा आ सकता है, वो stocks पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए rather than buying some 52 week low stock. Definitely fundamentally strong stock हो सकता है, लेकिन again जो Q3 results आ रहे हैं अभी, तो वो results पे भी ध्यान देना चाहिए. Results अगर stock का अच्छा है तो definitely that stock can move, but that all depend upon the results and news flows, right?
सो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान देनी चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जो मोमेंटम है स्टॉक्स में, वही स्टॉक्स में हमें एंटर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो लोअर लेवल्स पे मिल रहे हैं वो बाय कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेड्स हम लोग रिकमेंड करते हैं उसमें जो है बाइंग इंटरेस्ट होना चाहिए, स्टॉक में मोमेंटम होना चाहिए। वो हो सकता है 52 वीक हाई पे ना हो, लेकिन कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट्स होने चाहिए। अगर वैसे कुछ स्टॉक मिलते हैं तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए टू फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि रेलवे स्टॉक्स अच्छे लग रहे उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया डिफेंस स्टॉक्स अच्छे लग रहे, डिफेंस के भी हम लोग ने चार्ट्स देखे। सो ये काउंटर्स पे ध्यान देना चाहिए, ये काउंटर्स आपके रडार पे होने चाहिए। रीजन बीइंग एक टाइम था पहले कि रेलवे का पूरा बजट अलग से आता था, लेकिन अभी रेलवे का बजट साथ में आता है। अगर गवर्नमेंट अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका स्पेंडिंग अगर बढ़ाती है तो डेफिनेटली उससे जो है ये सारे जो स्टॉक्स है उनको फायदा होगा, और वो उसके बेसिस पे हम लोग अच्छा मूव देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द न्यूज फ्लोज आर एक्सपेक्टेड एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर काउंटर। इसके अलावा और भी कुछ सारे स्टॉक्स है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, दैट इज फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स। अगर मैं पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो हम लोग कुछ पीएसयू बैंक के स्टॉक भी देखेंगे। तो दिस इज पीएनबी 100 के आसपास चल रहा है, डेफिनेटली अच्छा काउंटर है। एक इसमें आप सीडीआई भी बाय कर, एज अ सीडीआई भी ये कॉल आप ले सकते हो। 100 के आसपास चल रहा है मेरे हिसाब से, तो काफी अच्छा सपोर्ट है 95 के आसपास, और स्टॉक ऊपर में अच्छा मूव दिखा सकता है 112 13 के आसपास। तो एक अच्छा मूव आ सकता है सीडीआई सॉरी पीएनबी में। तो एक पीएनबी हम लोग ये काउंटर बाय कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्पस। आज ही इसके रिजल्ट्स आए थे और एक अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हम लोग ने देखा है स्टॉक में। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द काउंटर यू शुड लुक आउट फॉर। काफी अच्छा सेटअप भी है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। लेवल से बाइंग है, सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, घूमने की कोशिश कर रहा है। कल के दिन बजट है और बजट के पहले अगर अच्छा स्टॉक मूव करता है तो डेफिनेटली ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो दैट्स व्हाई वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर। काफी अच्छा स्टॉक हमें देखने मिल रहा है। ग्रेट। सो गाइस, जैसे कि अभी हमने काफी सारे चीजों पे बात कर लिया है, हमने एक कन्विक्शन आइडिया भी दे दिया ऑन पीएनबी, राइट। जैसे कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा हमें तेजी दिख सकता है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन इट। सो लेट्स टेक अ फ्यू स्टॉक क्वेरीज, देवेंद्र सर। Yeah, sure. So do we have any option trade for today or tomorrow? No, as we have discussed that there is an IV crash today. So अगर मैं इंडिया विक्स का चार्ट शेयर करूँ आपके साथ, सो हम लोग को उससे पता चलेगा कि आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ये इंडिया विक्स का चार्ट है, दिस डायरेक्टली रिलेट्स टू द वोलेटिलिटी इन द मार्केट, और इंडिया विक्स का चार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने कहा कल के दिन में और आज के दिन में आईवी क्रैश देखने मिला है। सो अगर इंडिया विक्स की बात करें, कल के दिन में 6%, आज के दिन में फिर से 6%, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बात करें तो 12% का फॉल इंडिया विक्स में देखने मिला है। इसका मतलब ये है कि जो भी बजट के पहले वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी वो लास्ट 2 दिन में, कल के और आज के, कल के मंथली एक्सपायरी के दिन में और आज के दिन में थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है। अभी कल मंथली एक्सपायरी था तो कल हम लोग ने ऑप्शंस में अच्छे मूवमेंट देखे थे। रीजन भी मंथली एक्सपायरी, काफी सारे पोजीशंस बने हुए थे, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, और उसमें जो है रोल ओवर्स के डेटा, तो ये सारी चीजें थी, इसलिए कल के दिन में ऑप्शंस में मूव हमें अच्छा देखने मिले थे। लेकिन अगर आज हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में ज्यादा मूवमेंट नहीं है। रीजन बिंग आईवीज क्रैश हो रहे, थीटा डीके है, आने वाले टाइम में बजट के पहले थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। काफी सारे जो ट्रेडर्स है ऑलरेडी आईवीज, मतलब जो प्रीमियम्स है ऑप्शंस के, वो काफी ऊपर है। रीजन बिंग आईवी ऊपर था, आज कूल ऑफ हो रहा है थोड़ा सा, तो प्रीमियम जो है थोड़ा नीचे आ रहे हैं। तो अगर मूव आज अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो एक अच्छा अप मूव निफ्टी ने दिखाया है। सो आई विल जस्ट शेयर दी निफ्टी इंट्राडे चार्ट। सो इंट्राडे चार्ट निफ्टी का अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा अप मूव ही देखने मिला है लगातार, राइट। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लगातार अप मूव है, लेकिन इसी के साथ साथ जो ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो इतने नहीं चले।
इसका रीजन एक ही है, क्योंकि आईवीज थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। कल के दिन में बजट है, आईवीज फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली, जिसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हो सकता है कि निफ्टी चल जाए लेकिन निफ्टी का ऑप्शन ना चले, दिस देयर आर चांसेस। और प्रीमियम्स काफी हाई पहले से है बजट के चलते। तो अगर आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हो आप ऑप्शंस में, तो बहुत ही मतलब बहुत ही कन्विक्शन से होना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग कोई ऑप्शन बाइंग अवॉइड कर रहे हैं। थोड़ा सा डीके भी हो रहा है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग ऑप्शन ट्रेड राइट नाउ. We have already shared the conviction delivery for some time, for 2 to 3 days or 1 week. So that can be purchased. जैसे हम लोग ने पीएनबी डिस्कस किया, पीएसयू बैंक्स, और रिजल्ट अच्छा है, सबसे इम्पोर्टेंट था रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स वेर गुड। सो डेफिनेटली पीएनबी में आप बाय कर सकते हो। मैंने लेवल्स ऑलरेडी शेयर कर दिए, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द काउंटर। इसके अलावा अगर और भी कोई काउंटर हमें समझ में आता है, सो विल डेफिनेटली रिकमेंड। टिल देन वन कैन बाय दिस पर्टिकुलर काउंटर। कल के दिन बजट है, स्टॉप लॉस रखना और ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं ये स्टॉक में। सो वी कैन टेक 1 or 2 more questions right now, and after that अगर कोई ट्रेड रहेगा तो I definitely I'll share. So Deven sir, do we have any BTS trade for today? So as far as BTST is concerned, BTST में कैश स्टॉक्स आज हम लोग नहीं कैरी कर सकते। रीजन बिंग कल सैटरडे है और मार्केट ओपन है, लेकिन जो आज का ट्रेड हम लोग कैरी करेंगे तो कल के दिन में एग्जिट नहीं कर पाएंगे। स्टॉक सेल नहीं होगा, सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा, तो आज का बीटीएसटी हम लोग नहीं कर सकते। अगर आपको बीटीएसटी करना है तो फ्यूचर्स में कर सकते हो, आप फ्यूचर्स का ट्रेड कैरी कर सकते हो, फ्यूचर में कल एग्जिट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल because they are contracts and not the stocks actually. So contracts possible है, futures options हो सकता है, लेकिन जो है वो कैश स्टॉक्स या हम लोग कैश में डिलीवरी जो है कैरी करते हैं, जैसे कैश स्टॉक लेके कैरी करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि अगर बीटीएसटी करना चाहते हो तो बीटीएसटी सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में करें। ऑप्शंस में भी मैं अवॉइड करने की राय दे रहा हूँ, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो काफी कम हो रही है, 6% इंडिया विक्स नीचे आज के दिन में। और फिर भी अगर किसी को ऑप्शन में कैरी करना है, अगर कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और वो चाहते हैं कि कोई ऑप्शन कैरी करे, तो जब तक 3 सवा 3 नहीं बजते तब तक वेट करे, थोड़ा आईवीज जो कूल ऑफ हो जाए उसके बाद ही किसी में ऑप्शन में ट्रेड अगर कैरी करना है तो कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग की तरफ से कोई ऑप्शन का ट्रेड नहीं है। सो this is all about what we can say, the volatility as well as BTST. So BTST as of now अभी नहीं है, कल बड़ा इवेंट है, so कोई स्टॉक रहेगा तो फ्यूचर में आई विल रिकमेंड, लेकिन स्पॉट में अवॉइड करना चाहिए। Great. So guys, जैसे कि देवेंद्र सर ने ऑलरेडी मेंशन किया है that we will take one more query, since you know आज हमारे पास कोई BTST ट्रेड भी नहीं हो, क्योंकि कल हमारे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कल मार्केट बंद शुरू है, बट वी विल नॉट बी एबल टू सेल आवर पोजीशंस राइट इन द कैश। सो कंसीडरिंग दैट विल टेक 1 or 2 more। अरे वही स्टॉक्स है जो आज खरीदेंगे वो नहीं बेच पाएंगे, पुराना बेच सकते हैं, सिर्फ आज का खरीदा हुआ कल नहीं बेच सकते। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो बीटीएसटी, फ्यूचर में हो सकता है। ग्रेट। So can we buy PNB at current market price? Yes, definitely PNB हमारा कन्विक्शन डिलीवरी कॉल है, तो PNB बाय कर सकते हैं। 100 के आसपास रिकमेंड किया है, वही लेवल के आसपास चल रहा है, थोड़ा 1% ऊपर है लो लेवल से, लेकिन ठीक है, ये स्टॉक में बाय कर सकते हैं। So we have any, or can we initiate any stock options for the Feb series? स्टॉक ऑप्शंस भी सेम जैसे अविनाश हम लोग ने डिस्कस किया। आई नो काफी लोग है जो ट्रेड करना चाहते हैं, आज के दिन में स्टॉक्स में मोमेंटम भी है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कल इतना बड़ा इवेंट है, ऑप्शंस में वोलेटिलिटी थोड़ी अलग चल रही है। अगर इंडेक्स की जैसे हमने बात किया कि ऑप्शंस नहीं चल रहे, तो स्टॉक्स में थोड़ा उल्टा है, स्टॉक्स में कुछ कुछ ऑप्शंस जो है वो बहुत वाइल्ड मूव्स दिखा रहे हैं। और ऐसे टाइम में क्या होता है, इवेंट के पहले अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो
स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं. सो एज ऑफ नाउ अभी हम लोग के पास नहीं है. रीजन बीइंग लॉस नहीं होना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग वी शुड लुक एट. सो जब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे तो इसका रीजन यही है ऑप्शंस में कि काफी आईवीएस का वोलेटिलिटी है, काफी ज्यादा मूवमेंट है ऑप्शंस में, कुछ स्टॉक्स में. जैसे हम लोग ट्रैक कर रहे थे मारुति. So there are some liquidity problems as well into the stock options. मारुति अगर देखे 12,300 के आसपास चल रहा है, काफी अच्छा मूव दिखा है. लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे बहुत कॉस्टली है सबसे पहले. नेक्स्ट इज वोलेटिलिटी ज्यादा है ऑप्शंस के अंदर. एंड थर्ड इज लिक्विडिटी इशू है. कुछ कुछ स्ट्राइक में जो है हमें गैप देखने मिल रहा है. जैसे 100 का बायर और 102 103 का सेलर. तो इतना बड़ा जो गैप है वो कभी कभी आपको प्रॉब्लम दे सकता है. जब आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे तो हो सकता है. उसके साथ साथ रिजल्ट सीजन है, काफी सारे स्टॉक्स के मल्टीपल रिजल्ट्स हम लोग लगातार देख रहे हैं. तो रिजल्ट्स के चलते काफी स्टॉक में मूवमेंट आ सकती है. जैसे रिसेंटली मैं अगर बात करूं तो मैरिको का आज ही रिजल्ट है. और आप मैरिको के चार्ट को, आज का चार्ट जो है वो देख सकते हो. मैं अगर इंट्राडे चार्ट्स भी यहाँ पे लगाऊं तो इंट्राडे चार्ट में आप देखो 15 मिनट्स में कम से कम मतलब कितना मूवमेंट है. इफ आई कैलकुलेट दिस लो एंड दिस हाई देन 5% के आसपास स्टॉक में मूव है. और किसी एक साइड नहीं, दोनों तरफ. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड दैट्स वाई अगर आप कॉल ऑप्शन भी लेते मैरिको का तो मैरिको ने नीचे इतना बड़ा डिप दिया है कि आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और वापस से ऊपर आया. एंड उसके बाद वापस साइडवेज ट्रेड कर रहा है. सो साइडवेज ट्रेड में थीटा डीके का प्रॉब्लम. अगर रिजल्ट आता है, वोलेटाइल होता है स्टॉक, तो स्टॉप लॉस होने का प्रॉब्लम. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स. दैट्स वाई वी शुड वेट. और रिजल्ट्स जो स्टॉक में है उसमें ऑप्शंस अवॉइड करना चाहिए. मैं एक सवाल देख रहा था. आई वुड लाइक टू टेक दैट. अविनाश, मयूर जी पूछ रहे हैं कि बुल कॉल स्प्रेड लेके जाए कल के लिए. सो अगर आपका व्यू बुलिश है, आपको लग रहा है जैसे मार्केट ने ओवरऑल चार्ट्स पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है. और आपको अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड कैरी करना है क्योंकि आपको इसमें रिस्क पता है आपका कितना है, मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है आपको कितना हो सकता है वो आपको पता है. ट्रेड कर सकते हैं, आपको पता है आपकी रिस्क क्या है, वो हिसाब से ही ट्रेड करें. ऑप्शंस बहुत महंगे हैं. आपका ब्रेक इवन आप जरूर देखें. अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में आप अगर बुल कॉल स्प्रेड बना रहे तो आपका ब्रेक इवन काफी दूर हो सकता है. तो अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले रहे हो तो उसका भी आप डेफिनेटली ध्यान रखें. आपका ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है, उतना मूवमेंट कल के दिन में या आने वाले टाइम में एक्सपायरी तक उतना मूवमेंट एक एक सीडीआई मैंने लिखा और उसके साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हम लोग ने ऑलरेडी देखे हुए. सो आई होप दिस वाज गुड. तो कोई क्वेरी लेनी है तो हम लोग ले सकते हैं और उसके बाद सेशन एंड कर सकते हैं. डेफिनेटली देवेंद्र सर, एक क्वेरी जो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, इवन आई एम कीन टू नो अबाउट दिस. सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अमित जी. सो ही इज सेइंग दैट सर, व्हाट इफ आई डू buy and sell nifty futures at the same level in two different account with stop loss of 100 in each tomorrow morning before budget. मार्केट तो 100 से ज्यादा ही मूवमेंट देगा, प्रॉफिट में ही रहूंगा. व्हाट डू यू से? सर डेफिनेटली मार्केट 100 से ज्यादा मूवमेंट देगा. लेकिन व्हाट इफ दोनों तरफ दिया. अगर मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स आता है, आपका स्टॉप लॉस वहां पे ट्रिगर होता है, शॉर्ट का जो आपने पोजीशन बनाया, और उसके बाद वहीं से करेक्ट हुआ और वापस नीचे आया, तो आपका तो एक स्टॉप लॉस चला गया, दूसरे में आपके अभी तक पैसे नहीं बन रहे. जो लॉन्ग था डेफिनेटली वो लॉन्ग में आप एग्जिट कर पाए क्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर एग्जिट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगेन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है. तो थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी, लेकिन बहुत संभल के करना चाहिए. कॉस्ट ऑफ कैरी रहेगा इसमें, तो आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए. और उसके साथ साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आई रिकमेंड दैट आप हेज के साथ करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा.
एंड ये दो जो अकाउंट में आपने ट्रेड करने की बात की है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं डिफिकल्ट होगा एग्जिट के टाइम पे। आप डेफिनेटली पोजीशन बना लोगे सेम प्राइस पे, लेकिन एग्जिट होना आपका हो सकता है कल के दिन में वोलेटिलिटी में आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो स्टॉप लॉस अगर जंप हो जाता है सिस्टम के अंदर तो भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। सो आपने प्रॉफिट में तो बुक कर लिया अच्छा ट्रेड, लेकिन जो लॉस वाला है अगर वो स्टॉप लॉस जंप कर गया तो आप में वापस से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी की वजह से हो सकता है, नॉर्मली ये चीज नहीं होती, लेकिन वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस जंप्स होने के चांसेस होते। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी ट्रेड कैरी करना चाहते हो तो आप एक स्ट्रेटेजी के थ्रू करिए। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा इवेंट के पहले वोलेटिलिटी के पहले थोड़ा सा ध्यान से देना चाहिए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप जो भी ट्रेड कर रहे हो वो बहुत ही ध्यान से करें और स्ट्रेटेजी के थ्रू करें, दैट विल बी मोर बेटर वे। सो थैंक यू सो मच देवेंद्र सर, आपने अच्छा खासा हमें आउटपुट बता दिया, जो भी सवाल थे एकदम डिटेल में आई वुड से। तो मयूर एंड अमित जी, डेफिनेटली आपके सारे क्वेरीज के आंसर हो चुके होंगे। एंड डेफिनेटली गाइस, इफ यू हैव एनी more queries, please post it on Stockholm. We will be more than happy to answer you. And yes, that's it guys from our end. Thank you so much for joining. Don't forget to join us at 4 p.m. in the evening for decoding derivative session with our expert Ms. Shivangi Sarda. And also, just updating you again guys, we will have the budget session on Monday at 11:30 a.m. in the morning. So please set your calendars. We will be scheduling a session on budget by today end of the day only. So don't forget the session. Thank you guys for joining. Thank you so much, Devin sir. Thank you.